बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ है जो इसमें हम टॉफिल के कोर्स को कवर कर रहे हैं फॉर द बिगनर्स, फॉर द प्योर बिगनर्स। इसमें आज हमारा लेसन 7 है जिसमें हम सिंपल पास्ट टेंस को कवर करेंगे। इससे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ वर्ड अदर यूज़ कर चुके हैं, इस्तेमाल स्टडी कर चुके हैं, द वर्ड अदर दा इस्तेमाल स्टडी कर चुके हैं। हमने पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ किया और सिंपल कंटिन्यूस टेंस को स्टडी किया लेसन 6 में। आज लेसन 7 में हम सिंपल पास्ट टेंस को और पास्ट कंटिन्यूस को स्टडी करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द लेसन। Simple past tense is used for a completed action in the past that had happened at one specific time in the past. इसमें जो words हमने highlight किए हुए हैं, they are all simple past tense. They are not past continuous or past perfect. John went to Spain last year. Went is a second form of verb. The word is go. Verb is go. यानी कि John स्पेन लास्ट ईयर स्पेन जा चुका है. Bob bought a new bicycle yesterday. बॉब ने नई बाइसिकल कल ख़रीदी है. बॉट अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. मारिया डिड हर होमवर्क लास्ट नाइट. कल रात मारिया ने अपना होमवर्क किया है. डिड इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मार्क वॉश्ड द डिशेस आफ्टर डिनर. रात को कल डिनर के बाद मार्क ने अपने बर्तन धोए हैं. वी ड्रोव टू द ग्रोसरी स्टोर दिस आफ्टरनून. ड्रोव इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जॉर्ज कुक्ड डिनर फॉर हिज फैमिली सैटरडे नाइट. अगेन दिस वाज एन एक्शन कंडक्टेड बिफोर. This was all about past tense. Now starting the past continuous tense, इसको past progressive भी कहते हैं. ये straight simple formula है past progressive to continuous tenses का. इसको आप कहीं भी लिख लें, अपने नोटबुक पे लगा दें या अपनी नोटबुक पे सबसे ऊपर लिख लें ताकि आपको स्ट्रक्चर इसकी क्लैरिटी रहे. आप इस past continuous form tense में sentences का स्ट्रक्चर ये होता है कि it starts with the subject followed by was or were which are the helping verbs. इसमें was is used for the subject which is singular. For the plural subject were is used. और इसमें verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का एडिशन होता है. अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म कहाँ यूज़ होती है. वो एक्शंस, एन एक्शन विच वॉज अकरिंग इन द पास्ट एंड वॉज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन. ऐसा कोई एक्शन जो कि माजी में हो रहा हो एंड देन वॉज सडनली इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, ऑलवेज रेफर्ड, ऑलवेज मेंशन एज पास्ट कंटिन्यूअस. इसका स्ट्रेट फार्मूला देखते हैं. अगर आपके पास व्हेन फर्स्ट सब्जेक्ट सिंपल पास्ट, ये एक एक्शन है फॉलोड बाय एक्शन सेकंड विच इज सब्जेक्ट टू इन पास्ट कंटिन्यूअस. सो अगर आपका तो हम एक एक्शन हो रहा था और उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया है तो जो एक्शन हो रहा था दैट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. व्हेन सब्जेक्ट 1 मार्क, सिंपल पास्ट टेंस केम होम. Subject to Martha, past continuous was watching television. So जब Mark came home, Martha was watching television. So एक एक्शन जो कि कंटिन्यूस में हो रहा था वो ब्रोक हुआ by another action. इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी रीफ्रेस कर सकते हैं जिसमें आप एक एक्शन को पहले लिख लें यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस के साथ, पास्ट कंटिन्यूस के साथ, फिर फॉलोड बाय व्हेन एंड देन सेकंड सब्जेक्ट विद अ सिंपल पास्ट टेंस. सो व्हेन मार्था वाज वाचिंग टेलीविजन, व्हेन सेकंड सब्जेक्ट मार्क केम होम. सो आप इस सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्शन को जो कंटिन्यूसली हो रहा था फॉलोड बाय अनदर एक्शन विच एक्चुअली ब्रोक द फर्स्ट एक्शन. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक एक्शन, एक हमने यूज़ देख लिया कि जब एक कोई ऐसा काम जो माजी में हो रहा हो और उसको ब्रेक डाउन मिला हो या उसको ब्रेक मिला हो फ्रॉम अनदर एक्शन, तब हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. इसका सेकंड यूज़ ये है कि टू एक्शंस अकरिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट. इसको देख लेते हैं. इसमें हमारा जो रूल अप्लाई होता है वो ये है कि आपके पास फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसको आप पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज़ कर रहे हैं. वाइल का वर्ड यूज़ हो रहा है विच रेफर्स कि ये एक्शन कंटिन्यूस हो रहा है विद अनदर एक्शन इन पैरेलल. सेकंड सब्जेक्ट है एंड अगेन आपके पास सेकंड भी पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म है. मार्था वाज वाचिंग टेलीविजन वाइल मार्क वाज रीडिंग अ बुक. सो वाइल का वर्ड इस यूज़ आपका शो हो रहा है कि दोनों एक्शंस आर कंटिन्यूसली हैपनिंग एट द सेम टाइम बट हैपनिंग इन द पास्ट बिकॉज बोथ आर शोइंग पास्ट टेंस. दिस कैन ऑल्सो बी शोड एज वाइल एंड देन फॉलोड बाय फर्स्ट सब्जेक्ट past continuous, second subject past continuous. So while Mark was reading a book, Martha was watching a television. So there is no difference whatsoever. दो actions जो एक साथ हो रहे हैं उनमें हम while का word use कर लेंगे and the action which was interrupted by another action उसमें हम when का word इस्तेमाल करेंगे.
द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो पॉसिबल बट इट्स नॉट एज कॉमन एज द फर्स्ट टू. हमने पहले मैंशन की हैं वो भी पॉसिबल हैं, ये भी पॉसिबल हैं, बट इनकी जो यूजेस है या इनकी जो एप्लीकेशन है वो इतनी कॉमन नहीं है. फिर भी लेट्स हैव अ लुक. वाइल सब्जेक्ट फर्स्ट, past continuous, second subject and simple past. While Martha was watching television, Mark read a book. आप फोकस करें, मैंने सिंपल पास्ट के लिए वर्ड रेड बुक कहा है, ऑल दिस की स्पेलिंग रीड की है. सो इट्स जस्ट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन. सो इसका यूजेज भी है बट इट्स नॉट एज कॉमन एज आई मैंशन द फॉर्मूलाज बिफोर. सो वाइल मार्था वॉज वॉचिंग टेलीविजन, मार्क रेड अ बुक. पास्ट प्रोग्रेसिव एक्शन अकरिंग, इसके कुछ और यूजेस देख लेते हैं. एन एक्शन विच वॉज अकरिंग एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. हमने पहले स्टडी किया कि एक एक्शन जो पास्ट में हो रहा हो और वो इंटरप्ट हो बाय सेकेंड एक्शन. एक वो हमने स्टडी किया जिसमें हमारे पास दो एक्शन एक साथ कंटिन्यूसली पास्ट में हो रहे हैं. फिर एक एक्शन विच वॉज अकरिंग एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, वी डोंट नो व्हेन. सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. मार्था वॉज वॉचिंग टेलीविजन एट 7 o'clock लास्ट नाइट. सो इट्स जस्ट दैट सिंपल. कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई दो एक्शन साथ नहीं हो रहे. इट्स जस्ट वन वॉज एक्शन वॉज हैपनिंग एट द पास्ट टाइम लास्ट नाइट. Second example, what were you doing at 1 o'clock this afternoon? So it's about your action you were doing at that time. That's it. No interruption, no other thing, nothing in parallel whatsoever. Some more examples of continuous tense. John was walking to class when he lost his pen. So it's just one action was happening and the other happened in the middle. So the word when comes in. The student was reading while the professor was speaking. So the two actions are happening in the parallel in past. Third example, George was watching television when his brother called. So the watching television was actually has to interrupt because his brother called. Another example, Henry was eating a snack at midnight last night. When Mary came home, her husband was cooking dinner. One action happening, another happened. Mark was driving on Main Street when his car broke down. So it's just all list of examples which says an action which was happening in parallel, which happened in the past, or one happened and interrupted the other one. So it's just all are used for the past continuous tenses. ये हमारी एक एक्सरसाइज है. मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ अपनी एक्सरसाइज को और आप इसको अच्छे से देखें और जितने आपको फार्मूलाज आपने रूल्स पहले स्टडी किए हैं उनको रिवाइज कर लें और उनको यहाँ पे पहले अपने ब्रेन से पूरा इस्तेमाल करके यहाँ पे इनको इन ब्लैंक्स को फिल करें. वंस यू आर डन देन आप अपनी वीडियो को दोबारा प्ले करें और फिर देखें आपके कितने इसमें से क्लैरिटी है और आप 10 में से कितने % तक मार्क्स अपने ऑब्टेन करते हैं. ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है. मेक श्योर आप फ़ौरन स्किप ना करें टू आंसर्स बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू. आप अपनी मेमोरी में जितना फोर्स करेंगे अपनी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए फार्मूलाज को, ये उतने ही इंप्रेशन उसके अपनी मेमोरी में बनेगा और आप इन फार्मूलाज को इन रेगुलर रूल्स को हमेशा मेमोराइज रखेंगे. सो फॉर दोज हु आर डन विद एन एक्सरसाइज बाय नाउ, हम उनके लिए एक्सरसाइज आंसर्स को स्टार्ट करते हैं. Jean was eating dinner when his friend called. It's past tense. Jean is a singular subject, so हमने was use किया है. Eating हमने continuous के लिए इस्तेमाल किया है. While Maria was cleaning the apartment, her husband was sleeping or slept. It make no sense. It may no difference. Actually, it make no difference whether the husband was sleeping or has slept because it was one action was happening. Was cleaning was there. At 3 o'clock this morning, Eleanor was studying. So this was happening in the morning. Question 4, when Mark arrived, the Johnsons was having dinner but they stopped in order to talk to him. Again, आप एक action stop हुआ है from another action. So this was a simple past and this was second subject with the past continuous. John went to France last year is a straight plain past tense, simple past tense. Question 6, when the teacher entered the room, the students were walking. So a simple past tense followed by a past continuous. While John was writing the report, Henry looked for more information or was looking for more information. Regardless, कोई difference नहीं है because you can these two actions can be happen in parallel because one is happening past tense. It can be happening or it can be the one who interrupted. So regardless, no difference. हम while के फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में पहले पढ़ चुके हैं. We saw this movie last night is a simple past tense. At one time, Mr. Roberts owned this building. So it's a past over time. He doesn't own this building anymore. And last question,
Jose was writing a letter to his family when his pencil broke. So his pencil broken down while in the middle of writing the letter. So it's a past continuous. So I hope these all answers make sense. You will go through after answering these questions your formulas again. जितनी बार आप इनको revisit करेंगे इन formulas को, इन structures को, इन uses को, ये उतना आपकी memory का भी part होगा, आपकी writing का, फिर eventually आपकी conversation में भी reflect होगा. I hope it all makes sense. If you like this video, share, subscribe.